Hi students, in continuation with the elasticity video lecture 14, I'm going to discuss with you a very important relation between, साथ साथ में कॉपीज खोल लीजिए, आप इन नोट्स बनाइएगा, ओके, डोंट बी सो मच डिजिटल, नोट्स भी बनाइएगा. रिलेशन बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बिल्कुल अपने स्टडी टेबल के ऊपर, बिल्कुल क्लासरूम की फील लेके, जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो फील लेके लिखिए. रिलेशन बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, lateral strain, Poission's ratio. So this is going to be our topic of this content video. Volumetric strain, you all know, change in volume to the original volume. Lateral strain, you all know, change in radius or diameter to the original diameter. Poission's ratio, you all know, the ratio of the lateral strain to the ratio of the, अभी वीडियो नंबर 13 में मैंने आपको बताया, the ratio of the lateral strain to the longitudinal strain. अभी तो मैंने बताया आपको, मतलब अभी मीन्स वीडियो नंबर, इससे प्रीवियस वीडियो, आई थिंक इट्स वीडियो 14. अब स्टेप नंबर 1 करना क्या है, हम इमेजिन करेंगे एक लॉन्ग बार हैविंग ए लेंथ L. कंसिडर अ लॉन्ग बार having a length L, radius R and volume V. अब हम वॉल्यूम से खेलते हैं. टू डिराइव दिस रिलेशन हम लोग वॉल्यूम से कैलकुलस की हेल्प लेके इस रिलेशन को डेवलप करते हैं. ठीक है, तो व्हाट कैन बी द वॉल्यूम ऑफ ए लॉन्ग बार जिसका रेडियस R है एंड लेंथ L है. V इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर L. इज इट राइट? मार्केट नंबर 1, मैं जब बोला करता हूँ ना मार्केट नंबर 1, तो मेरी ऑफलाइन क्लास में बच्चे बोलते हैं बाजार नंबर 1. वो मार्केट नहीं, मार्क MAR, मार्क IT81. ओके, अब मैं इसको क्या करने जा रहा हूं, डिफरेंशिएट करता हूं बोथ साइड्स. डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to say L length. मैं स्टूडेंट्स कंप्लीट स्टेप्स डालने जा रहा हूं, राइट? ओके, कंप्लीट स्टेप्स. तो dd L of V, dd L of pi R square L, dd L of V, pi is taken, dd L of R square L. Now dd L of V, pi is taken out, R square
DDL of L UV theorem plus L DDL of R square, ये बन गया DDL of V pi as it is, DDL of L is 1, L DDL of R square is 2R dr by dl. It's not dr by dl, it's rather DDL of R. हम बोल देते हैं dr divided by dl, but divided नहीं होता, ये बोलने को चलता है, राइट? सो एक मिनट, ये वायर थोड़ा, अब इसके बाद ध्यान से आप नोट करो, ये मेरे पास क्या एक रिजल्ट बन गया. ये रिजल्ट जो आपके सामने है, तो ये बन गया DDL ऑफ B. मैंने ना चेंज किया है, कैपिटल L की जगह स्मॉल l लिख दिया, और लिखने में फ्लो रहता है. ओके, इसको आप इनिशियली कैपिटल L लिखे, स्मॉल l कर देना. तो DDL of V pi R square L 2R dr. Now we can rewrite it dV pi R square dl 2RL dr. अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मार्केट नंबर 2. I'm giving you number 2 and I'm dividing 2 by 1, means वॉल्यूम से डिवाइड करने जा रहा हूं. मैं पूरा स्टेप्स लिख रहा हूं, आप नोट्स बनाएंगे इसको. डिवाइड 2 by 1, तो dV upon V pi R square dl upon V 2RL dr upon V. Is it right? स्टूडेंट्स, ये वाला सारा आपने नोट किया हुआ है, तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है? ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, मैंने रब कर दिया. ओके, dV अपॉन V dV अपॉन V पाई R स्क्वायर dl, नीचे पाई R स्क्वायर L प्लस 2 पाई RL dr upon pi R square L. This gets cancelled. dV upon V dl upon L, pi gets cancelled, L gets cancelled, 2 dr by R. Hope it is clear. अब जादू देखो, मैजिक देखो, मैजिक. dV क्या है? चेंज इन वॉल्यूम. V क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम. क्या बन गया भैया? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. dl क्या है भैया? डेल्टा L dl क्या है? चेंज इन लेंथ. L कौन है भैया? ओरिजिनल लेंथ. Some Anglais will ask me, what is the meaning of भैया bro? dl is what bro? Change in length. L is what bro? Original length. Okay, English people. And dr क्या है bro? Change in radius. R is what bro? Original radius. Okay bro? Therefore, this is what? Longitudinal strain, and this is twice into lateral strain.
How is it, bruh? Hope it is clear. कि भाई ये समझ आया आपको? It's so simple it is. I once again repeat, my language will be bilingual. I'll be speaking English. You know, I can speak English, that I can live high in English, I can talk in English, walk in English, because it is a funny language. I can speak in Hindi. हम शुद्ध हिंदी का उच्चारण भी कर सकते हैं, ठीक? Third language is my mother tongue. सानू पंजाबी भी आंदी है, असी पंजाबी च भी पढ़ा सकते हैं, पर पंजाबी वाला बंदा हिंदी समझ ही लेंदा यार. पंजाबी भरा तंग ना करो, पंजाबी ब्र. Okay, so anyway, volumetric strain is equal to longitudinal strain plus 2 times lateral strain. Hope it is clear, the relation between volumetric strain and lateral strain and Poission's ratio. ये मैंने रब कर दिया, यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है. So in the previous video, lateral Poission's ratio, I've told you something about Poission's ratio. You know, bro, I mean, students, let's be serious. What is sigma? Sigma is minus dr by r dl by l. अरे भैया, Poission's ratio minus dr by l dl by l. तो what is dr by r minus sigma dl by l? तो dr by r की जगह हम क्या लिख सकते हैं? माइनस सिग्मा dl by l, है ना. अब मुझे इस साइड पे जाके रब करना पड़ेगा ना. dr by r minus sigma dl by l. Now from here, dv upon v dl by l minus 2 sigma dl by l. तो dv upon v dl by l 1 minus 2 sigma. What is dv upon v? Volumetric strain. What is dl by l? Longitudinal strain. What is sigma? Poission's ratio. This is another very good relation. dv upon v, volumetric strain, dl by l, longitudinal strain, 1 minus 2 Poission's ratio. Interesting. So dear students, this is an important relation for you, an important relation. Volumetric strain equal to longitudinal strain 1 minus 2 Poission's ratio. Hope it is clear. It's very important, very important. I'm going to discuss something very, very important. Unbelievable. See, in this equation, what you can give any number, say equation small a. I'm just going to rub it. It's simply, you have written already. See, in the equation, if sigma is equal to 0.5, if sigma is equal to 0.5, then dv upon v dl by l 1 minus 2 into 0.5. तो dv upon v
dl by L 1 minus 1 to dv upon v is equal to 0. This implies dv is equal to 0. Change in volume is 0. Volume is constant. Volume is constant. Volume is constant and the material is incompressible. And the material is incompressible. We cannot compress it. How's it? You know, students, when the volume is constant, what is K? Bulk modulus. What is bulk modulus? Change in volume to the original volume. So what is K? Change in volume to the original volume. K is equal to 0. What is compressibility? 1 upon K. That is infinity. The system is incompressible. We cannot compress it. How's it? One thing more. If sigma is 0, lateral strain is 0. If sigma is 0, lateral strain is 0. In that very case, there is no change in its dimension of radius, diameter. So this is how the cork, C-O-R-K, material like we can stretch it, where there is not much change in its radius. Theoretical value of Poission's ratio is lying between -1 to 0.5, though it is 0 to 0.5 practically, right? So, dear students, this was a very important concept we have done. So, you must do it again and again, revise it again and again. Now, students, lot of students are asking, sir, how we can prepare for the competitive exams? For that, my dear students, you have to go to one website, www.topranker.com, or you can simply type Top Ranker in Google Play Store. Register, log in, get unlimited practice of multiple choice questions. Thank you very much. Vipin Sharma Physics channel is your channel. Tell everyone how it is. If it is good, tell others. If not, to me at the number 9814121996. Thank you very much all. God bless you.